अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि एक नज़म है दोस विंटर संडेज, जिसके शायर हैं रॉबर्ट हेडन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस नज़म की बहुत ही आसान समरी, उर्दू ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को। इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर्स गुजर गए हैं सब पे मैंने पहले से वीडियोस अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपके साथ मैं अब इस नज़म के हर स्टैंजा की, हर लाइन की उर्दू में ट्रांसलेशन शेयर करता हूं। पहला स्टैंजा, संडेज टू माय फादर गॉट अप अर्ली, इतवार को भी मेरा बाप सुबह जल्दी उठता, एंड पुट हिज क्लॉथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड, और नीले स्याही माइल सर्द मौसम में कपड़े पहनता। तीसरी लाइन है, देन विद क्रैक्ड हैंड्स एंड दैट एच्ड, फिर अपने फटे हुए हाथों से जो दर्द करते थे, फ्रॉम लेबर इन द वीक डे वेदर मेड, हफ्ते के दिनों के सख्त मौसम में मुसलसल सख्त मेहनत करने से। बैंक्ड फायर्स ब्लेज, नो वन एवर थैंक्ड हिम, वो दबी हुई आग को शोला बना देता, किसी ने कभी उसका शुक्रिया अदा ना किया। तो ये पहले स्टैंजा की पहले बच्चों ट्रांसलेशन होगी। अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। I'd wake and hear the cold splintering breaking, मैं जागता और सुनता कि सर्दी टूट रही है। When the rooms were warm he'd call, जब कमरे गर्म हो जाते तो वो मुझे पुकारा करता था। एंड स्लोली आई वुड राइज एंड ड्रेस, मैं आहिस्ता आहिस्ता उठता और कपड़े पहनता। फीलिंग द क्रॉनिक एंगर्स ऑफ दैट हाउस, उस घर के मुस्तकिल गुस्से से डरता हुआ। तीसरा और आखिरी स्टैंजे की तरफ चलते हैं। स्पीकिंग इंडिफरेंटली टू हिम, मैं अपने वाले से बेदिली से बात करता था। Who had driven out the cold, एक ऐसा शख्स जिन्होंने मुझे मौसमों की शिद्दत से महफूज रखा। एंड पॉलिश्ड माई गुड शूज एज वेल, और मेरी मनपसंद चीजों का खास ख्याल रखा। What did I know, मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या खबर थी। Of love's austere and lonely offices, मोहब्बत का खामोश और बेगर्ज फराइज। तो प्यारे बच्चों, यहां आकर इस नज़म की उर्दू में ट्रांसलेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब प्यारे बच्चों, आपके साथ मैं शेयर करता हूं इस नज़म की बहुत ही आसान समरी। तो प्यारे बच्चों, यह है इस नज़म की आसान समरी, आप इसे नोट कर लें। द पोएम दोस विंटर संडेज बाय रॉबर्ट हेडन इज अबाउट अ father's silent love and sacrifice for his family. The poet remembers how his father used to wake up early in every Sunday, even on the coldest winter mornings, to make the house warm and comfortable. दूसरा पैराग्राफ है, he says Sundays to my father and got up early and put his clothes on in the blue black cold. These lines shows the father's hard work and devotion even when he was tired from weekday labor. His cracked hands that etched tell us about his pain and struggle. तीसरा पैराग्राफ है, the father would light the fire to warm the house, but no one ever thanked him. The poet, who was a child at that time, did not understand his father's quiet way of showing love. He admits speaking indifferently to him. This means he spoke without care or respect. अगला पैराग्राफ है, now as an adult the poet realizes that love is not always shown through words or hugs. Sometimes love is shown through simple selfless act. He regrets not appreciating his father and ends the poem by saying, what did I know of love's austere and lonely offices. लास्ट पैराग्राफ है इस नज़म का समरी का। प्यारे बच्चों, दिस मीन्स he now understands that real love is austere, strict, disciplined and lonely, because such love often goes unnoticed and अनएप्रिशिएटेड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ का इस नज़म की समरी भी मुकम्मल हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, आपके साथ मैं शेयर करता हूं इस नज़म की हर स्टैंजा की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को। तो स्टूडेंट्स, इस नज़म के 3 स्टैंजास हैं, तो इन तीनों स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी शेयर करूंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके साथ मैं शेयर करता हूं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अगर इस नज़म में से कोई भी स्टैंजा आ जाए तो आपने बस यही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन सबकी अलग होगी, वो आगे चलकर वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले शेयर करता हूं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस है, these lines have been taken from the poem Those Winter Sundays by Robert Hayden. कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, कोई भी स्टैंजा आ जाए तो उसमें आपने यही कॉन्टेक्स्ट लिखना है। इन दिस पोएम द पोएट रिमेंबर्स द क्वाइट एंड रेगुलर एक्ट्स ऑफ लव हिज फादर
performed for the family. All that time, the poet neither noticed his father's care nor thanked him for his efforts. तो ये है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट. कोई भी स्टैंजा आज आपने बस यही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है. प्यारे बच्चों चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, पहले स्टैंजा की तरफ. तो प्यारे बच्चों पहला स्टैंजा, Sundays too my father got up early and put his clothes on in the blue black cold, then with cracked hands that etched from labor in the weekday weather made banked fires blaze, no one ever thanked him. तो इसके एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लें. द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फादर्स रूटीन ऑफ वेकिंग अप early every Sunday. Even on his day, even on his day of rest, despite the blue black cold, the father would put on his clothes and start working to warm the house. His hands were cracked and etched from hard labor throughout the week, showing his struggle and dedication. He would light the fire to make the house warm, but sadly no one ever thanked him. This stanza highlights the father's silent sacrifice and selfless love that went unappreciated by his family. तो प्यारे बच्चों ये था पहले स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन. अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ. Second stanza, I'd wake and hear the cold splintering breaking. When the rooms were warm, he'd call, and slowly I woke. I would rise and dress, feeding the chronic angers of that house. इसकी explanation की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों. The speaker recalls how he used to wake up and hear the sound of the cold splintering breaking, a description of the fire spreading warmth through the house when the rooms became warm. The father would call him to get up. The child, however, would rise slowly, not out of love but out of fear of the chronic angers of that house. They suggest that there was emotional distance or tension in the home. The child didn't understand that behind those daily routines was father's deep quiet care. तीसरा stanza, speaking differently to him who had driven out the cold and polished my good shoes as well. What did I know of love's austere and lonely offices. तो प्यारे बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. इन दिस फाइनल स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर हिज इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फादर. Father had driven out the cold and even polished his good shoes. The speaker never showed affection. Now as an adult he realizes that love is not always shown through words or emotions. It can also be austere, strict, disciplined and lonely, performed through daily duties and silent sacrifices. The repetition of what did I know shows his deep sorrow and understanding that real love often goes unnoticed. तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर इस नज़म की समरी, ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है. उम्मीद करता हूँ आपने सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा. एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. मुझे सर हसन शबीर को इजाज़त दें. जज़ाकल्लाह.